अंग्रेजी रहेगी. Now, definition of anemia is defined as a reduction in the circulating hemoglobin mass below the critical level. Now, what is the hemoglobin mass? जो normally हम describe करते हैं grams per deciliter. Normally, the hemoglobin is between 12 to 14 grams % or per deciliter. WHO has helped up to say and derive at one volume, that is 11 grams, as a normal hemoglobin level in pregnancy. Why the hemoglobin goes down in the pregnancy? ये हम लोग थोड़ी देर के बाद में डिस्कस करेंगे जब हम प्रेगनेंसी का मामला डिस्कस करेंगे. Therefore, definition of anemia is the hemoglobin level below 11 grams in pregnancy should be considered as an anemia. So anemia के लिए जो cut off value है वो है 11 grams. Now what is the incidence of anemia? कितने लोगों में anemia पाया जाता है? Anemia in pregnancy is present in a very high percentage of the pregnant women in Asian countries. Exact data is not available, but about the prevalence of the nutritional anemia, however, according to the WHO, is to the extent of 56%. 56% of the pregnant women in the Asian subcontinent, they have prevalence of anemia to be 56%. Almost more than half of the women are anemic. In India, the incidence of anemia pregnancy has been noted between 40 to 80%. Now, why this anemia is occurring? This anemia is occurring because of various types of dietary habits that we harbor in India, and we are not worried about supplementing our diet with iron. So mainly the cause of anemia in this subcontinent is because of the deficiency of the iron and deficiency of the protein. Now, when we want to see the deficiency of iron, you must look that the total iron requirement during the whole set of pregnancy is almost 1000 milligram. And in the distribution of this 1000 milligram, you can see the fetus and placenta takes away almost 300 milligram. 500 milligrams are taken up in the form of increasing the red cell masses. And lastly, the 200 milligram is required in the basal loss during the parturition. The word parturition means during the process of delivery. So that's why you'll find almost you need to have 1 gram of the iron present in the total scenario of your pregnancy. Now, average requirement is somewhere between 4 to 6 milligram per day. Now, remember, the absorption of the iron is very, very, very low. So you can say that if you are giving 40 to 50 milligram of the iron, then the absorption of the iron from the intestine would happen morely 4 to 5 milligram. It's almost 1 to 10 ratio. So remember, you have to eat a lot of iron to get absorbed 1/10 of it, because there is a mucosal block at the level of your intestine, and this mucosal block varies from one person to another person. That's why you need to consume a large amount of iron, and then small amount of iron is absorbed. Rest of them all goes into the feces, and when it goes into the feces, you can see that your feces or your stool becomes black in color. Out of the average 4 to 6 milligram requirement of iron per day, you have 2.5 milligram in early pregnancy, 5.5 milligram in the middle part of the pregnancy, that is from 28 to 32, and again you need 6.8 milligram from 32 weeks onward in the pregnancy. So remember, as the pregnancy advances, your requirement for the iron goes up and up. Now, how will you classify the anemia? There are many ways in which anemia is classified, but most of the ways are technical ways. So I'm not going to discuss them here because it is beyond the scope of our present audience to understand the technical scope of classification of the anemia. Anemia is often classified as mild degree anemia, moderate anemia, and severe anemia. When you have a mild, your hemoglobin is ranging between 9 to 11 grams. If it is a moderate anemia, it is ranging between 7 to 9 grams. And if it is a severe anemia, then it goes down below 5. It may have 4 to 7 or even less than 5. It is called as a severe anemia, which is less than 5 or less than 4.
So 4 categories of anemia, it is also classified according to the hematocrit. But then this becomes too specialized for that. Now let us see what this anemia is causing to the pregnant woman or to the adolescent girl. So what is the threat of anemia? What is the risk of this anemia? If you are looking at the risk, we have divided them into antenatal, that is before the before the first month, or you can say as soon as the patient has become pregnant. Then intranatal means during the stage of pregnancy, and then these complications or risk factor could be described as after the pregnancy is over and the baby is out. So in the antenatal period, there is a poor gain weight. Then there is the preterm labor. There are chances that you might abort, and there should be what you call it as the preterm. Before the term ends, the labor can occur. Then there is a postpartum hemorrhages, postpartum hemorrhage, intra-hemorrhages, then placenta previa. Placenta previa is a condition where you know that placenta is a kind of anchor, is a kind of hold for the fetus in the uterus. Now this hold is present somewhere in the middle of the posterior wall. But in case of iron deficiency anemia, this particular may be present in the lower part of the uterus. So it becomes a potential member for to be undergoing what you call it as defect of the placenta. And then there are chances that this placenta might sit down, leading to abortion. So these are the conditions which are when you are pregnant. Intranatal, when you are pregnant, from the second month onwards until any time, you may have a bleeding, you may have intranatal hemorrhages, there may be shock, and sometimes when the level of anemia goes down, the lady may enter into cardiac failure. And then if at all something is required to perform on this lady, then she becomes a risk of anesthesia. Anesthesia, people will say, no, we cannot give the anesthesia if there is an emergency condition. So these are the important risk factors. And lastly, even after the delivery is over, you may have a postnatal sepsis, postnatal infection, because bacteria can enter, and the people having low hemoglobin have got a very low resistance, and because of the low resistance, the bacteria can enter and can thrive into the body and can lead to what you call it as severe postnatal sepsis and may lead to shock. This is very serious complication after the baby of the delivery is out. Subinvolution and embolism are the other two complications. So remember, by having an anemia during the pregnancy, not corrected properly, not taken properly, can lead to a scare of all these complications in a woman. So it is better that the anemia should be taken care at a very early phase. Now, not only anemia affects the mother, but it also affects the fetus. It also affects the neonatal child which is born. So what are the fetal and neonatal risks of anemia in mother? One of the most important is the child may be born premature, before the date. And you know, a premature child needs extremely important care in the ICU neonatal care or in the normal neonatal care. He has to be put into the incubator, and you know that process of incubator 7 to 8 days. This is all because of the maternal anemia. Child may be born with a low birth weight. There may be poor Apgar score. What is Apgar score? Apgar score is a numerical score when the child is born, because there is a system of Apgar score, and there are normal values of Apgar score, low Apgar score, and high Apgar score. So when the child is born of an anemic mother with a low Apgar score, and according to the number of Apgar, you have to take extra care of the child. It may lead to fetal distress. The child may have difficulty in breathing when still the child is in the womb of the mother. And of course, like mother, the child will also have a neonatal anemia, because enough blood is not being circulated as a result of anemia in the child or feto-maternal or mother-to-child circulatory system. Now, what are the causes of anemia? This is the most important thing, particularly for this group of gathering. They must understand that what is the real cause of anemia.
Now, the cause of anemia has been divided into a physiological cause, that is a natural causes, and then pathological cause of anemia. Nutrition anemia may be solely deficiency of iron. As you know that iron is present in varied amount of food that I'm going to discuss to you later in this part of the presentation. But iron deficiency is one of the most important factor in the anemia. Second is the folate and vitamin B12 are the co-supporters of the iron, because iron alone is not important. It is in presence of folic acid and vitamin B12. The iron enters the metabolism, and then that is very important. Sometimes you may get a dimorphic anemia where there is an iron deficiency along with protein deficiency. Because as you know, hemoglobin is a word which has been divided into two. Heme, which is an iron containing moiety, and globin, which is a protein containing moiety. So for the synthesis of hemoglobin in the bone marrow, you need iron as well as protein. So when you have a double deficiency of all, what you call as a nutritional deficiency through the process of eating, it may be a dimorphic anemia. Sometimes hemorrhages occur in a pregnant lady. These acute hemorrhages may be in the form of piles, sometimes get hurt and start bleeding. Sometimes there may be chronic hemorrhages if she has a lot of stress and she's suffering from ulcer in the intestine and ulcer in the stomach. And those ulcers, they bleed inside the stomach or in the intestine, leading to hemorrhage inside, leading to reduction in the hemoglobin concentration. Or the patient may have hemoglobinopathies. We know that in Indian and Pakistan subcontinent, the black people, they harbor a kind of anemia which is called as a sickle cell anemia and other various types of hemoglobinopathy like thalassemias and other. Particularly, this is common in the black belt of India, like Chhindwara district and the Gond community. In Pakistan, also in the black belt, you will find it, this kind of hemoglobinopathy, where the normal hemoglobin is deficient in these people, and the normal hemoglobin is replaced by either hemoglobin S or hemoglobin C or hemoglobin D. So sharing of S and A, C and A, and D and A reduces the volume of the A and thereby reduces the oxygen carrying capacity of the blood as a result of hemoglobinopathies. Hemolytic anemia may be present as a form of congenital or it may be acquired. That is basically a medical condition, and there are varied types of hemolytic anemia, and this is not the place to discuss hemolytic anemia. If you need more dilatation on this, please ask your people from Paro and Parao to take this. I will be surely able to dilate upon congenital and acquired anemias of hemolytic origin. Aplastic anemia is a condition where there is a depression of the bone marrow, and as a result of the depression of the bone marrow, hemoglobin is not manufactured, and thus slowly it leads to what we call it as reduction in the hemoglobin concentration, which is called as aplastic anemia. Now, what are the clinical presentation of the anemia? How the patient manifests with anemia? How you know that patient has got anemia unless the patient has got some kind of manifestation. So the symptoms of presentation in case of anemia is patient complains that I'm very much tired all the time. I have no desire to work, lack of interest, lack of, you can see in anything, patient wants to just lie down. So this is very common in anemia. She complains that I don't feel doing anything. There is a listlessness and there is fatigability. So this is the first and foremost symptom. Loss of appetite. Patient don't like to eat anything. Sometimes she eats only 2 or 3 or 4 lukmas and then says, sorry, bhai, mera ho gaya khana. Digestive upset. She will have a kind of digestive upset all the time, belching, she may have a lot of gases. She may have abdominal distension. She may have some amount of abdominal distress that we call it a gastric upset. Dyspnea. Dyspnea is a condition where person feels having a difficulty in breathing. So person walks for a short time, for a short length in the kitchen or in out of the house, and she says, mujhe saans chad gayi hai. My breaths have become short. That is another important condition called as a dyspnea. And then
followed by dyspnea. These are all chain of events occurring one after another. You may have a palpitation. Palpitation is दिल का धड़कना. She will complain, मेरा दिल बार बार धड़कता है, थोड़ा देर में चलती हूँ, धड़ 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 होता है मेरे दिल में. So that particular condition is called as palpitation. Now, what are the signs? Now, symptoms are the presentation with which patient will complain to you. But you as a doctor or somebody, an intelligent observer, he will observe some signs in it. She has become pale. She was not a pale before the pregnancy, but her skin color has become very dampened and it has become more and more lighter and lighter, which we call it as a pallor. If you look at the nail, usually the nails are pink in color because the nail bed has got a fine set of capillaries. But if you press the nail and try to recoup again, it does not become pink. It is again remain the white. That is called as a pale nails. Polynochias are the deformities in the nail, and pale tongue. If you ask the patient to put the tongue out, normally the tongue is a very pinkish structure. But in case of anemia patient, if you ask her to put the tongue out, she has become just pale. So this is one of the important signs. And then in severe cases, you may have a swelling on the leg because of the low hemoglobin and because of the low protein. So as a result of low protein and low hemoglobin, the patient may have a edema on the leg, which is one of the hallmark signs of anemia. Now we have to do the investigations. As soon as you take the patient to the doctor, he will investigate. And the first and the foremost investigate is a complete blood count, CBC. Now CBC is done on a blood to find out how much is the hemoglobin, and then some other parameter, what is the WBC count, what is the RBC count, how much is the platelet, how much is the hematocrit, all the blah, blah, blah. The modern hospital, they have a CBC, which is 22 parameter. So it can give you much more result. But if you take him to the small hospital where they may have CBC machine showing only 7 parameter, or if you still take him to the primary care center, you may find it only CBC without any other information. Remember, CBC of 22 parameter done in a big hospital gives you a real good score of inflammation and real good score of information in terms of various other parameters. Peripheral smear examination is they take the blood from the finger prick, spread the blood on the slide, stain the slide, and try to look for various types of condition. MCV, MCH, MCHC is a very important part of the CBC, which is not done in a manual way. TIBC is the measure of iron circulating in the blood, which is called as the total BC, that is which is called as iron selective parameter of the C. Then there is a serum iron. You can do the serum iron, which is not included in the CBC. Serum iron is a separate quantity. Remember, serum iron, every normal person should have 60 microgram. But if it is less than 60, it is suggestive of low serum. And if it is less than 10, it is highly suggestive of very, very low serum. And this patient must be started with the serum immediately. Serum ferritin is a vehicle in the blood which carries the iron from the blood to the bone marrow, where the bone marrow is a place where the RBCs are manufactured. And all other investigation like urine, stool, and serum protein are required. Then your doctor will know what is the cause of the anemia in a given person. All these things are required, particularly for the proper treatment of the person. Whatever the amount of items which are deficient should be replaced by those items, and your doctor will be able to tell you what are those things. Special tests are also required, but they are not important here for the common audience, because these special tests are required to diagnose the special conditions which is responsible for the anemia. That includes various types of liver diseases, that includes various types of protein diseases, that includes various types of bilirubin metabolism disturbances, even it may be the vitamin B12 deficiency. So all these tests for namesake are very important, but each one, not all of them, is required in a given patient when your doctor sees the patient and tries to demonstrate the signs of the patient. And from the previous basic
investigation. If you find there are some abnormality of the test, then you have to do the special test. These tests are within the reach of your doctor, and definitely as a public domain, these tests cannot be described because they need a knowledge of medical science to be with everybody. Now, what are the prophylactic measures can be taken? Now, prophylactic measures is you must do the regular screening for the anemia, especially for the adolescent girls during the school days, and also for the pregnant woman as soon as they become pregnant or even before pregnancy. Nowadays, in the Western world where this women are educated, of course, I don't, by giving this statement, I do not mean in our part women are not educated. This is absolutely not true. In our part also women are educated, but the education curriculum in the Western part includes all these things. So they are taught while they are learning in the school how to manage the anemia and how to diagnose the anemia, which I suppose in our curriculum, this may be lacking in some of the types of the curriculum. It may be present in some high type of the curriculum where the elite students are participating in this education program. Now, you will find that prophylactic measure is you have to encourage giving iron and iron-rich food. More interest towards the iron-rich food, which I'm coming later in this part. Fortification of widely consumed food with iron. Nowadays, there is a new system that many food are whatever we consume regularly, like gehu ka atta, like dal ka atta in the form of besan, or like any other makai ka atta, vagera, vagera. They are fortified with iron. So you don't have to take iron separately. The iron is mixed with them. So while you're taking the roti, you naturally get iron. So now the process of fortification is very common. So routine screening of anemia has to be done. Second, encouraging the iron-rich food. Third is use the food which is fortified with iron and iodine and other, providing iron supplement from the school days. Now, this is a special program for the adolescent girl. By the way, what is adolescent girl? Adolescent girl is the age of the girl starting from 10 years of old until 19 years of old. This age group, which we call loosely as a pre-teen age group. Teenagers are above 18, pre-teens are below 18, and this adolescent group is somewhere between 10 to 18 or 10 to 19 years of age. That is basically this age. Now, there is a special way which is followed now in case of adolescent girl to provide an iron supplement from the school days. Now, what is that? That I'm going to discuss. Annual, and then all of them must be subjected to the screening and deciding the risk factor. So that is very, very important way in which you can find out much earlier that the patient or the adolescent girl or a pregnant woman is suffering from anemia, and you can immediately start fortifying with the medications and iron-rich supplement food. Now, prevention of the iron deficiency is one of the important goals of the health workers. Now, prevention in the adolescent girl and prevention in case of already pregnant woman or before the pregnancy occur, there are so many measures that can be taken before the woman decides to become pregnant. Nowadays, there is a liberation movement of women, and every couple decides when we have to have children, and they prepare themselves for children in a perfect way. So this is the time when you are preparing for the pregnancy, when you are preparing for the baby, you have to start taking precautions. Prevention of the iron deficiency is prophylaxis of non-pregnant women. As I was telling, that in this developing world, in this progressive world, every couple or every woman, he or she decides that I am pregnant hona hai. So naturally, they stop all the activities related to contraceptives and related to coitus interrupters or related to using some other methodology which they were using for the prevention of the pregnancy. They stop using these methodologies and they have a natural, normal way of meeting, and they are looking for natural and normal way of getting pregnant. In this particular time, almost the 3 months,
you must have a prophylaxis of iron. Iron supplementary is very important even before you become pregnant. Now, how to do that? I will come to it later in this part. Routine iron supplementation is very, very important in this particular part. WHO recommends some kind of universal oral iron supplementation for the pregnant woman, that is 60 milligram of elemental iron and 400 microgram of the folic acid for 6 months in pregnancy before, and this will try to help. This will make a sky to earth difference when you become pregnant. What are the iron rich food? Remember, these are the very important nutritional supplement, and you must make use of it to supplement the requirement of iron by the food. Pulses, cereals, jaggery, good. Jaggery means good. Beetroot. Beetroot, of course, you know what is the beetroot. Shaljam. And green leafy vegetables, like all those green leafy vegetables like silk ki bhaji or aapke, you know better all the green leafy vegetable. And then meat is a very important source of animal protein, especially the liver is a very, very important organ in the animal, and it is a storehouse of various types of the protein and various types of iron. I'm talking about the animal liver, may it be bakre ka liver or may it be other animal liver. They are very rich in the protein and they are very rich in the iron. So eating a liver will definitely give rise to a large amount of iron supplementation and protein supplementation. Eggs are a must. Eggs, if you see yellow of the egg and white of the egg, the entire white of the egg is a protein, and yellow of the egg is full of vitamins and other releasing factors. So one egg gives you almost 7 grams of the protein. And to the pregnant woman, we recommend 1 to 2 eggs to be taken every day to supplement their requirements of the protein. Fish is a very, very good source, very light and a very good source of natural amino acids and natural proteins. Legumes, you know, and the dry beans. The dry beans are the very important source of protein, while legumes are the important source of vitamin E. So all these substances on whatever you can see on the table and you can be seen in the vegetable market, they are very, very important source of the iron. So exclusively, if a person is anemic, they should choose the various types of the food and try to correlate its requirements. What are the effects of anemia on pregnancy? The effect of anemia on the pregnancy are seeing from the first trimester. Pregnancy has divided into first trimester, second trimester, and third trimester. That is 0 to 3, then 3 to 6, and 6 to 9. So these are the time scale months for the pregnancy. Now let us try to look at what are the effects of anemia on a mother and what are the effects of anemia during the labor of the delivery. These are the two important topics that needs to be considered. In the pregnancy, what happens? There is an accumulation of the water, because in the pregnancy, there is a complete disturbance in the hormonal status of the woman. A large amount of HCG, that is human chorionic gonadotrophin, is secreted, which has got an anabolic effect on the fetus. Large amount of estrogen is secreted in the first part of the pregnancy, followed by progesterone in the later part of the pregnancy. All of these hormones, they have got an anabolic effect. What do you mean by anabolic effect? Anabolic effect means produce a good health, produce a positive metabolic energy in the woman, because she has to deal with two lives, her own life and the life of a child in her womb. So this is an attempt on the part of the nature to fortify the various energetic sources of the woman by bringing about these changes. But if the anemia is there and there is a large amount of water accumulation, there is a large fluid is circulating in the body, it causes an excessive weight on the heart, because the heart has to circulate the large amount of fluid. So in this process, while dealing with an extra amount of fluid, which is in terms of the blood and a lot of water is being there, so heart might fail. Second important is increased susceptibility to infection, because our
immune system goes down because of the large amount of changes occurring, and as a result of lower immune system, she may be more susceptible for infection. Preterm labor can occur. You know, the requirement for the labor is various important factors: hormonal factors, weight factor, circulating fluid factor. All of them are affected. And if you find once there is a large amount of circulating fluid factor, it might stretch the uterus and it may induce a preterm labor. Of course, this is not the one factor, but if you go to the gynecologist, they will give you large number of other factors. Pre-eclampsia is the very serious and deadly complication before the parturition, before the baby is delivered. And this is heralded by severe, you can say, vibrations, or what you call it as convulsions. It may be heralded by various high blood pressure, sudden illness in the patient. She may have convulsions also. So all those are the serious side effects of all these things. And then the person needs to be admitted to the hospital. Pre-eclampsia, and if the seriousness continues, it may lead to the process of eclampsia. And this eclampsia is serious, and the mortality in the eclampsia is to the tune of almost 20 to 30% if not managed properly. So these are the various effects of anemia in the mother. When the mother is undergoing a delivery, or what you call it the parturition, that time the uterus may contract very, very feebly. So there is a hypotonic uterine inertia where the uterus, because naturally one of the main factor in pushing the baby out from the womb of the mother to outside is the contractibility of the uterus. What you call it as बच्चेदानी की contract होने की क्षमता, contract होने की उनकी सलाहियत, वो कम हो जाती है जबकि आपको एनीमिया होता है. वो बच्चे को पुश नहीं कर पाते नीचे. इसका मतलब ये है कि जब हम कहते हैं कि अरे दर्द लीजिए, दर्द लीजिए, दर्द लीजिए, that is the time where woman is trying to contract her uterus, और वो दर्द लेने से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है और धीरे से लोअर एंड ऑफ द यूट्रस का इफेसमेंट होकर वो बच्चा जो है वो बच्चादानी के बाहर नॉर्मली डिलीवर्ड होता है. मगर चूंकि ताकत ही नहीं है, चूंकि वो पूरी तरह बिल्कुल ऐसी फ्लैट हो गई है कि वो दर्द लेने की उसकी जो सलाहियत है, उसकी जो क्षमता है, वो बिल्कुल पूरी कम हो गई है. पसीना पसीना हो गई है, बोले भाई मैं दर्द नहीं ले सकती, मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती. दिस काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड एज यूटेराइन इनर्शिया. और वो हाइपोटोनिक यूटेराइन इनर्शिया हो जाने की वजह से पूरा लेबर जो है वो अटक जाता है. इट मे लीड टू अरेस्ट ऑफ द लेबर, and then you may have to intervene by doing cesarean section, or you may have to intervene by applying a forceps and pulling the baby physically. ये डिपेंड करता है गायनेकोलॉजिस्ट के चॉइस के ऊपर और आपके कंडीशन के ऊपर. कोई एक ये नहीं कह सकता कि मैं फोर्सेप लगा के निकालूंगी, या वो ये नहीं कि आज तो सिजेरियन सेक्शन इतना कॉमन और इतना सेफ हो गया है कि 10 मिनट में बच्चा जो है बाहर आ जाता है और उसके बाद में फिर उसकी स्टिचिंग करते रहते हैं यूट्रस की. बाकी वो जो जेन्युइन पीरियड होता है जहां बच्चा जो है वो लेबर के अंदर डिस्ट्रेस में होता है, जिसको कहते हैं फिटल डिस्ट्रेस, वो 10 मिनट में जो है वो कम किया जा सकता है बाय डूइंग सिजेरियन सेक्शन. तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन जो है वो एनीमिया की वजह से होते हैं. पोस्टपार्टम हेमोरेज भी होता है क्योंकि यूट्रस की ताकत इतनी कम हो गई है कि वो बच्चा डिलीवर तो ज्यों त्यों कर देता है. ज्यों त्यों आप मुख्तलिफ किस्म के इंजेक्शन, पिटोसिन और वगैरह लगाकर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करके उसके बच्चे को फिजिकली भी थोड़ा सा जरा उसके पेट को सहला कर बच्चा तो डिलीवर हो जाता है, मगर उसके बाद में वो यूट्रस जो है वो बिल्कुल ही ढड्ढा हो जाता है, बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्ट करने की ताकत से खत्म हो जाता है. इसकी मिसाल ऐसी है कि आपने घोड़े को चाबुक मार मार के दौड़ाया और वो इतना थक गया घोड़ा कि अब जो है आपका घोड़ा कोई ऑर्डर मानने को तैयार नहीं है, वो खट से नीचे बैठ जाता है. तो इस तरह से ये थके हुए भागे हुए घोड़े की मिसाल जो है उसको आप याद रखिए. आपको ये समझ में आएगा कि ये मिसाल होती है उस औरत की जिसको हाइपोटोनिक यूट्राइन इनर्शिया होके जबरदस्ती से उसका दबा के और मुख्तलिफ किस्म के इंजेक्शन लगा के मुख्तलिफ किस्म की उसको सपोर्ट करके जब आप बच्चा डिलीवर कर देते हैं तो उसके बाद में वो औरत किसी काम की नहीं होती है. उसको 2-3 घंटे तो ऐसी नींद आती है
कि वो अपनी जिंदगी के में कभी इतनी नहीं थकी होंगी। तो ये भी कंडीशन जो है वो तैयार होती है, और इस कंडीशन से बचने के लिए हमको एनीमिया को सही तरीके से सपोर्ट करना होगा। हाउ विल यू मैनेज द एनीमिया? नाउ ये टॉपिक जो है ये जनरल टॉपिक है। मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपनी मियाद को जानता हूँ, मैं अपने लिमिटेशंस को जानता हूँ, मगर फिर भी आउट ऑफ आउट बिकमिंग अ डॉक्टर आई कैन टेल यू, you have to have an oral iron therapy in the form of tablets, safe, inexpensive and effective way of administration. मगर इसकी जो सबसे बड़ी बात है वो आपको रेगुलरली वो आयरन की गोलियां खाना पड़ेगा। बहुत लोगों को आयरन की गोलियां चलती नहीं है, इसलिए कि दे कैन नॉट टॉलरेट इट, और नंबर 2, बहुत लोगों को इंटेस्टाइन के अंदर में माल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम होता है, उसके वजह से वो आयरन की जज्बियत, आयरन को एब्सॉर्ब नहीं कर पाते, आयरन डायरेक्ट के डायरेक्ट इंटेस्टाइन से निकल जाता है। ऐसे लोगों के अंदर में फिर इंजेक्टेबल थेरेपी जो है वो आपको देनी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि वो आयरन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। उसके 2 टाइप के इंजेक्शन होते हैं, एक होता है इंट्रामस्कुलर, जो पहले पहले इजाद हुए और पहले पहले चलते थे पहले, और दूसरे नंबर का जो इंजेक्शन वो है इंट्रावेनस इंजेक्शन। आजकल की दुनिया में हम ज्यादातर इंट्रावेनस इंजेक्शन ही देते हैं, इसलिए कि उसका डोज भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके लेने में कोई तकलीफ नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का तो ऐसा है कि क्योंकि ये आयरन का सॉल्यूशन है, उसको डीप मसल में देना पड़ता है। अगर सुपरफिशियल मसल में दिया तो बहुत ज्यादा पेन होता है, और वो पेन के मारे पेशेंट जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। लिहाजा उसको डीप इंट्रावेनस ग्लूटियल रीजन में, ग्लूटियल बोले तो कुल्हों के रीजन में, कुल्हे में दिया, ये हाथ में तो दे ही नहीं सकते आप, कुल्हों में देना पड़ता है वो, तो कुल्हों के रीजन में उसको बड़ी नीडल से दिया जाता है, और उसके बावजूद भी उसमें वो पेन होता है। तो आजकल के डॉक्टर हजरात और डॉक्टरीन हजरात जो है ना वो इसको ज्यादा प्रेफर नहीं करते, इसके वजह से कि इसमें दर्द ज्यादा होता है, और पेशेंट जो है दर्द होने की वजह से दूसरे बार इंजेक्शन लेने के लिए नहीं आता। लिहाजा इंट्रावेनस इंजेक्शन बहुत सेफ है। इंट्रावेनस इंजेक्शन को डाइल्यूट करके 200 ml की सलाइन या ग्लूकोज में मिक्स कर देते हैं, और वो ग्लूकोज का, जैसा हम ग्लूकोज का इंजेक्शन देते हैं उस तरीके से वो इंजेक्शन में दे देते। उसमें ना तो दर्द होता है और उसमें ना किसी किस्म की कोई और किस्म की कोई परेशानी होती है। उसी के अंदर में कई बार जो है वो फोलिक एसिड भी डाल दिया जाता है, मल्टीविटामिन भी डाल दिया जाता है, तो वो साथ साथ में वो सब चले जाता है। हफ्ते में 2 बार ये इंजेक्शन देते हैं, और इसका डोज जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है बेस्ड अपॉन योर बेसिक हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। तो उसका एक फार्मूला आता है जो डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं, और उस फार्मूले के अंदर में आपका बेसिक हीमोग्लोबिन कितना है, आपका वजन कितना है, आपका बॉडी मास कितना है, इन तीनों चीजों को इक्वेशन में डाल के आपको कितने ग्राम एलिमेंटल आयरन जरूरी है, उसके हिसाब से वो आपके इंजेक्शन में डिवाइड करके आपको वो हिसाब लगा के देते हैं कि 2-2 इंजेक्शन हफ्ते में 2 बार 4 हफ्ते या 5 हफ्ते आपको लेना होगा। तो दैट विल गिव यू ए फुल डोज ऑफ आयरन, और उसका रिस्पांस भी जो है वो बड़े अच्छे तौर पे मिलता है। इसके लिए आपको, अब इसके बाद में मैं ये जो बता रहा हूँ ये जस्ट आपके मालूमात के लिए है कि अगर आप ओरल आयरन थेरेपी खा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, तो बहुत सारे आयरन के सॉल्ट्स अवेलेबल है। एक है आयरन सल्फेट, ये बहुत कॉमन है, इसकी 200 मिलीग्राम की टैबलेट आती है। दूसरा होता है फेरस फ्यूमरेट, ये जरा बेहतर तरीके से टॉलरेट होता क्योंकि इसके ग्रैन्यूल्स जो है वो छोटे होते हैं, और एब्सॉर्प्शन उसका बेहतर है सीरम फोलेट से। याद रखिए सारे के सारे आयरन की गोलियां, इनके अंदर जो आयरन होता है वो 40 to 45% एब्सॉर्ब होता है। 60% ऑफ द आयरन नीचे के रास्ते से निकल जाता है, क्योंकि आयरन को एब्सॉर्ब करना एलिमेंट्री लेवल के ऊपर बहुत मुश्किल है। तो कई लोगों के अंदर तो वो ब्लॉक रहता है इंटेस्टाइन के अंदर में, जिसे हम कहते हैं माल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम, और माल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम की वजह से तो ये लो ओरल आयरन थेरेपी का आयरन एब्सॉर्ब नहीं होता। तीसरे नंबर का आयरन जो है वो ग्लूकोनेट है, ये जरा बेहतर है बनिस्बत सल्फेट के और फ्यूमरेट के, मगर बहुत महंगा है, और इसकी जो है 320 मिलीग्राम की टैबलेट आती है। और एक है फेरस सक्सिनेट, उसके बाद में फेरस एल्यूमिनियम साइट्रेट, फेरस एस्कॉर्बेट, ये मुख्तलिफ किस्म के सॉल्ट है आयरन के, और इसका लेने का तरीका भी टैबलेट फॉर्म में है और उसी तरीके से लिए जाते हैं। किसी के अंदर एब्सॉर्प्शन अच्छा होता है, किसी के अंदर साइड इफेक्ट्स नहीं होते, किसी के अंदर टॉलरेंस अच्छा होता है, वगैरह वगैरह। इसके मामले में आप डॉक्टर से पूछिए, वो आपकी सही तरीके से रहनुमाई करेगा, सही तरीके से आपको हिदायत देगा। अब रहा प्रॉब्लम साइड इफेक्ट्स ऑफ द आयरन,
मैं अर्ज कर चुका हूँ कि उसके साइड इफेक्ट्स के अंदर में नॉशिया, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, यानी यू मे हैव ए डायरिया, यू मे हैव ए नॉशिया, यू मे हैव ए कॉन्स्टिपेशन। तो कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया, किसी में कॉन्स्टिपेशन तो किसी में डायरिया, ये सारी चीजें होते रहती है। लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। और उसके बाद में छोटे बच्चों में, पर्टिकुलरली 10 साल की उम्र वाले बच्चों में, वो अपने दांतों का स्टेनिंग हो जाता है, थोड़े थोड़े जो है ना दांत के अंदर एक कालापन आना शुरू हो जाता है, दांत की जो लस्टर होती है, जो चकमकाहट जो होती है, वो धीरे से खत्म हो जाती है। और दूसरे जो है वो लोअर जीआईटी के अंदर में भी यू मे हैव ए कॉन्स्टिपेशन फॉलोड बाय डायरिया एंड यू मे हैव ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंटेस्टिनल गैसेस, व्हाट यू कॉल इट एज ए फ्लैचुलेंस। तो ये जो है उसके साइड इफेक्ट्स है। और जैसा कि मैंने अर्ज किया आपसे कि कभी कभी ओरल आयरन थेरेपी जो है वो बड़ी मुश्किल होती है, तो इंजेक्टेबल आयरन थेरेपी देना पड़ता। और इंजेक्टेबल में भी इंट्रामस्कुलर है जो आज के डेट में ऑब्सोल्यूट है, फिर भी जो पुराने जो प्रैक्टिशनर्स है वो अभी भी यूज करते हैं। मगर सबसे बेहतर होगा कि इंट्रावेनस, उसको कहते हैं आयरन डेक्स्ट्रॉन दिस वन, और वो आयरन सॉर्बिटॉल सैट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स जेक्टोफर एंड आयरन डेक्स्ट्रॉन, ये इंट्रामस्कुलर है। और वेरियस टाइप्स ऑफ इंट्रावेनस फॉर्मेट भी अवेलेबल है, मगर आजकल ज्यादातर इंट्रावेनस फॉर्मेट, क्योंकि उसका सही डोज दिया जा सकता है, सही तरीके से पेशेंट ले सकता है बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन से। और चूंकि वो हॉस्पिटल जाकर लेना है तो पेशेंट अपने हाथ से कभी किसी किस्म की कोई गलतफहमी या कुछ राय नहीं कर सकता, उसको हॉस्पिटल जाना ही जाना है और नर्स को वो देना है, लिहाजा वो बेहतर फॉर्म है। इंट्रावेनस आयरन के अंदर में आप जो है वो उसका डोज कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके डोज को कैलकुलेट करने के बाद में उसको डिवाइड कर सकते हैं, और उसके डिवाइड के होने के बाद में यूजुअली 4 से 6 हफ्ते के अंदर में ये कोर्स पूरा हो जाता है, और उसके अंदर में देयर इज अ गुड लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन डेवलप्ड इन दिस केस। कई जगह पर हीमोग्लोबिन इतना लो हो जाता है, 4 ग्राम है, 5 ग्राम हीमोग्लोबिन है। अब अगर आपने आयरन थेरेपी उसको शुरू की तो उसको लगेगा 1 महीना 1.5 महीना, और इस दरमियान में उसका हीमोग्लोबिन बनते बनते वो किसी और कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाएगी। लिहाजा ऐसी सिचुएशन में व्हेन द हीमोग्लोबिन इज लेस देन 7, इसका मयार जो है 7 ग्राम हीमोग्लोबिन से कम हो या उससे भी कम हो, 5 ग्राम हो, 3 ग्राम हो, 4 ग्राम हो, ऐसी सूरत में आपको आयरन थेरेपी तो शुरू करना ही करना है, वो तो लाबुद्ध है, इसके बगैर तो चारा ही नहीं है। मगर वो थेरेपी शुरू करने से पहले उसको ब्लड देना जरूरी है ताकि फौरी तौर पे उसका हीमोग्लोबिन बढ़ जाए। तो इफ हीमोग्लोबिन इज लेस देन 7 ग्राम और much less than 7 gram, then we take a resort of giving a transfusion to the patient. Indicated in severe anemia at a hospital. Moderate anemia में 36 वीक की उम्र में अगर सीवियर एनीमिया है तो रिकूप होने के कोई चांस नहीं होते, लिहाजा उसको ब्लड देना पड़ेगा। और 36 वीक के पहले भी अगर एनीमिया है जो कि 3 ग्राम है, 2 ग्राम है, ऐसी हालत में आयरन थेरेपी को वक्त लगेगा, लिहाजा आपको सबसे पहले डायरेक्ट आरबीसीज इंजेक्ट करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। दूसरा जो इंडिकेशन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, इन केस अगर एंटीपार्टम हेमोरेज हो गया ड्यूरिंग बिफोर द डिलीवरी, ह्यूज हीमोग्लोबिन लॉस हो गया एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लीडिंग, एज अ रिजल्ट ऑफ हेमोरेज, और आफ्टर द डिलीवरी, जैसा मैंने कहा कि डिलीवरी के बाद में घोड़ा थक जाता है, हाइपोटोनिक यूट्राइन इनर्शिया हो जाता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, वो जो थिक ब्लड वेसल जो यूट्रस में प्रेगनेंसी के दरमियान में जो बनी थी, उस पर्टिकुलर थिक वेसल को कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है ताकि वो थिक वेसल बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और उसके अंदर से निकलने वाला ब्लड रुक जाए। मगर अब ये है कि हॉर्स पूरी तरह टायर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, तो वो जो थिक ब्लड वेसल है उसमें से भाड़ 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 ब्लड निकल के जा रहा है, उसको कहते हैं पोस्टपार्टम हेमोरेज। वो ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रहा, इसलिए कि वो डायलेटेड ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही, इसलिए कि यूट्राइन मसल जो है, जो बच्चादानी की जो मसल है, जो रहम में मादर की जो मसल है, वो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही, उसकी वजह से वो ब्लड वेसल वैसी की वैसी है और उसमें वो नल की तरह भका भक ब्लड निकल रहा है। तो ऐसी हालत में उसको कहते हैं पोस्टपार्टम हेमोरेज। ऐसी हालत में इट इज एन सीरियस इमरजेंसी इन ऑब्स्टेटिक, और वहां आपको 1, 2, 3, 4, 5 ब्लड लगाने पड़ेंगे, इसलिए कि वो इतने छोटे 1 यूनिट और 2 यूनिट का काम नहीं है,
ये तो आपके होशियार गायनेकोलॉजिस्ट और होशियार अस्पताल के लोग ही बता सकते हैं कि किस तरीके का होता है। मैं यहाँ डील करता हूँ तो पीपीएच के अंदर में 5-5, 6-6 ब्लड लगते हैं, फिर उसमें प्लाज्मा भी देना पड़ता है और बड़ी मुश्किल की बात है। तो ये कंडीशन होने से पहले इसको बचाया जा सकता है, इसका वकाया है, इसके इसके जो लक्षण हैं उसको से बचाया जा सकता है अगर आप एनीमिया से पूरा कंट्रोल करते रहे। और इससे भी अगर मामला न बना और वो ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए और वो ब्लीडिंग जाना बंद नहीं हुआ, तो आखिर और आखिर एक ही जो है उसका वो है कि फिर उसको न रहे बांस न रहे बांसुरी, तो यूट्रस को जो है वो काट के निकालना पड़ता ताकि वो यूट्रस से ब्लीडिंग ना हो। ये एक लास्ट रिसोर्ट होता है, कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट इसका पैरोकार नहीं होता। पूरी तरीके से वो कोशिश करते हैं कि यूट्रस को बचाए रखे ताकि उसका जो जीवन है वो औरत का जीवन जो है उसमें फिर से वो अच्छी होने के बाद में फिर से उसके औलाद पैदा हो सके। ये हर गायनेकोलॉजिस्ट की कोशिश होती है, हर डॉक्टर की कोशिश होती है, मगर जान जो है वो सबसे भारी है। तो इसको जान को बचाने के लिए, और यूट्रस अभी पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं काम कर रहा है, ब्लड की कमी है, ब्लड इतने अमाउंट में नहीं मिल रहा है, तो गायनेकोलॉजिस्ट उसको बड़े क्लैम्प से रोक देता है और उसको दबा के बड़े क्लैम्प से यूट्रस जो है वो काट के बाहर निकाल देता है और फिर वो वहां पर सी देता है ताकि इस तरीके से उस ब्लीडिंग को स्टॉप किया जाए। इसे कहते हैं हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरोटोमी। ये दो किस्म की अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो हिस्टेरेक्टोमी जो है वो कंप्लीट रिमूवल ऑफ द यूट्रस करना पड़ता है। ये इतना रेयर भी नहीं है, बहुत सारी हमारी बहनों को और माओं को इस कदर ब्लीडिंग होता कि कभी उन्होंने कभी अपने प्रेगनेंसी के आलम में ध्यान ही नहीं दिया। और कभी कभी तो ये होता है कि मल्टीपैरा जो वुमन है जिनके 2 से 3 ज्यादा बच्चे हैं, वो तो अपने कॉन्फिडेंस पर ही जो है ना वो उसको चलाती है, मगर ये कॉन्फिडेंस जो है आखिर में बहुत बुरी तरह कारामद साबित होता है और जानलेवा साबित होता है। और इसी सिचुएशन में उनकी हिस्टेरेक्टोमी भी करनी पड़ती है। ये एक बहुत बुरा कॉम्प्लिकेशन है। मैं दुआ करता हूँ कि हम सबको अल्लाह ताला हमें बचाए रखे और हम सबको इससे नजात मिले। अब मैं आ रहा हूँ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, इसके ऊपर ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ये जो एरिया जो आपको लाल कलर में बताया गया है, ये जो है वो दुनिया के वो कित्ते हैं, दुनिया के वो जियोग्राफिकल रीजन है जहाँ पर सीवियर एनीमिया पाया जाता है औरतों में और नौशीन बच्चियों में। एडोलेसेंट लड़कियों का उर्दू में नाम है नौशीन बच्चियां। तो इन नौशीन बच्चियों में यहाँ मैक्सिमम एनीमिया पाया जाता है। जहाँ पर लाइट ब्राउन कलर है वहाँ पर मॉडरेट, और जहाँ सफेद कलर पाया जाता है वहाँ पर एनीमिया की मिकदार कम है। एनीमिया इन एडोलेसेंट गर्ल, अभी नौशीन बच्चियों के इसमें एनीमिया की क्या इंपॉर्टेंस है और उनको किस तरीके से डील करना है। 21 कंट्रीज असेस्ड बाय यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है वो यूनाइटेड नेशन की एक कंपनी है और एक ग्रुप है जो कि हेल्थ रिलेटेड मैटर में हर चीज का सर्वे करता है। तो यूनिसेफ के सर्वे ने ये बताया कि 21 countries they have got the severe anemia. 4 to 8 African countries reviewed shows more than 4% anemia. इन अफ्रीकन कंट्रीज में 40% से ज्यादा एनीमिया पाया जाता है। इंडिया के अंदर में तो ला मुहावला 58% एडोलेसेंट एज में। अब वो एडोलेसेंट एज का जो मैंने आपको जो एक ब्यूरा बताया कि वो 10 साल के ऊपर और 19 साल से पहले, मगर रियल एडोलेसेंट जो प्री टीन है उनका जजमेंट लिया गया है 15 से 19 के बीच में। उसके नीचे जो बच्चे हैं ना 15 साल से नीचे, उनमें एनीमिया की मिकदार थोड़ी कम होती है, इसलिए कि माँ बाप ध्यान देते हैं, बेटी दूध पी ले, बेटी सूप पी ले, बेटी अपने हाथ से खिला देते हैं वगैरह वगैरह। तो उनका रिक्वायरमेंट जो है ना एनीमिया का कम रहता है क्योंकि माँ अपने हाथ से खिलाती है, माँ अपने हाथ से दूध पिलाती है, उनको प्रायोरिटी रहती है क्योंकि ये बच्चों से ज्यादा माँ मोहब्बत करती है। मगर जब 15 साल के ऊपर बच्चियां हो जाती है ना तो वो माँ का नहीं सुनती न बाप का सुनती है, ये प्री टीन होती है। और इनमें जो है ना फिर वो मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, यूमी ये तो बहुत ही बुरा है। इस टाइप के एटीट्यूड हमारे 15 से 19 साल के बच्चियों में होते हैं और वो फिर एनीमिया का शिकार होती है। 15 से 19 साल के इसमें ग्रेटेस्ट टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट, बच्चियां बड़ी हो रही है, बच्चियां होशियार हो गई है, बच्चियां मेनार्क को पहुंच गई है, उनकी महावारी शुरू हो गई है
और हर महीने में उनके जेनेटल ट्रैक्ट से थोड़ा सा ब्लड निकलना शुरू हुआ है माहवारी के जरिए, लिहाजा ब्लड का लॉस हो रहा है, खाने में फूड फैट्स बढ़ गए हैं और उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, ये सारी चीजें बढ़ रही है। और खाने के अंदर फूड फैट्स, खाऊंगी तो मैं बर्गर खाऊंगी तो मैं पिज्जा खाऊंगी। अब ये पिज्जा और बर्गर के अंदर ये चीजें नहीं पाई जाती। बेटी अपने घर की रोटी खाओ, बेटी अपने घर में गोश्त का सालन बनता है खाओ। ना ना मम्मा मैं तो गोश्त खाती नहीं, काइंड ऑफ थिंग्स। ये मैं अपनी घर की कहानी सुना रहा हूँ, मेरे घर में भी कोई दूसरी कहानी नहीं है। जो कहानियां आपके घर है ना, मेरा घर भी वैसा ही है। तो ये सारी चीजें जो है ये हमें मजबूर करती है कि हमारी 15 से 19 साल की बच्चियां जो है वो शिकार होती है एडोलेसेंट एनीमिया की। और जाहिर है 15 से 19 साल की बच्चियों की अगले 5 साल में शादी होनी है। हमारे यहाँ शादियां जल्दी होती है, 22 साल 23 साल 25 साल। अगर बहुत ही एजुकेशन के अंदर बच्चियां मुलविस हो गई तो 25 के ऊपर अब वो उनका प्रोसेस शुरू हो गया। एनीमिया तो अब से ही है और फिर वही क्या कहेंगे, रूठे हुए मिजाज और बेढंगी रफ्तार ये चलती रहती है। और उसमें फिर ये बच्चियां जब प्रेग्नेंट होती है तो उनकी हालत भी वैसी रहती कि दे हैव एनीमिया ऑफ द प्रेगनेंसी। मैं कुछ ज्यादा बोल गया अपने हदों से और अपनी काविशों और कोशिशों में। अगर कोई चीज किसी को माइंड किया है किसी ने, या किसी ने इसको अपने दिल को लगाया है, तो बराए करम आपसे मैं माजरत खाऊं। तो ये हो गया आपका एनीमिया का पार्ट। अब जी बोलिए। We have a lot of questions coming up in the chat box. या ये अभी मैं खत्म कर रहा हूँ ये, उसके बाद में आपके सवालों की सारी चीजों के लिए मैं हाजिर हूँ। थैंक यू। अब इस एनीमिया से ये जो एडोलेसेंट गर्ल की जो एनीमिया होती है उसके अंदर सबसे पहले जो चीज मार खाती है, जिससे नुकसान होता है, वो है स्कूल परफॉर्मेंस। बच्चियों का एजुकेशन का मयार कम हो जाता, इसलिए कि उसका ध्यान कम हो जाता, एनीमिया की वजह से थक जाती है। उनकी जो ब्रेनी जो कंडीशंस होती है वो धीरे धीरे असरअंदाज होती है। लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, वो लोग जो है अपना लेसन पूरी तरह नहीं कर पाते, होमवर्क पूरी तरह नहीं कर पाते, स्कूल में पीटी होती है फिजिकल ट्रेनिंग, उसमें भी कचराते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। और जब वो प्रेग्नेंट होते हैं तो उस वक्त भी उनके इसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि एडोलेसेंट गर्ल्स की जो आदतें और जो उनकी जो क्या कहेंगे उसको आदत और तकालीद, वो यूजुअली चेंज नहीं होती, प्रेग्नेंट होने के बाद में वो भी कंटिन्यू होती है, लिहाजा उसका वो शिकार बनती है। तो अब एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन बच्चियों को जो कि 10 साल से ऊपर है और 19 साल से नीचे है, स्कूल के अंदर में एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, उसका नाम है इंटरमीडिएट आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। इसको कहते हैं शॉर्ट में IFS। ये IFS का प्रोग्राम WHO ने शुरू किया है। उसमें हफ्ते में एक दिन स्कूल की सारी बच्चियों को इस एज ग्रुप के अंदर वो डोज दिया जाता है। वो डोज क्या है? उसके अंदर आयरन है, उसके अंदर फोलिक एसिड है और उसके अंदर थोड़ा सा प्रोटीन का पार्ट है। ये डोज उसको ओरल फॉर्म में दिया जाता है हफ्ते में एक दिन, ताकि उनकी जो डिफिशियंसियां है वो डिफिशियंसियों को कम करने में मदद हो सके। उनको इस तरह की एक बुकलेट दी जाती है। ये बुकलेट आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, इंटरनेट आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन में। ये WHO का एक बहुत बड़ा रिकमेंडेशन है और वो बर्रे सगीर के इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका के स्कूलों में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आप इसकी तरफ जरूर देखें, वो बुकलेट को भी इंटरनेट से डाउनलोड करें। अब वो सप्लीमेंट का कंपोजिशन क्या है? उसमें आयरन है 60 मिलीग्राम और फोलिक एसिड है 2800 माइक्रोग्राम, और उसके साथ में वेहिकल है जो कि उसका टेस्ट को बदल दे। वो मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं जिससे ये खाने में पैलेटेबल बनता है। 1 सप्लीमेंट पर वीक इज गिवन और ड्यूरेशन एंड टाइम इंटरवल बिटवीन द पीरियड ऑफ सप्लीमेंटेशन 3 months ऑफ सप्लीमेंटेशन फॉलोड बाय 3 months ऑफ नो सप्लीमेंटेशन। तो हर हफ्ते 3 महीने तक ये दिया जाता है, बाद में बंद कर देते हैं। बाद में बोलते हैं कि अपने घर पे जाओ, अपने घर पे खाना खाओ, और खाने की लिस्ट बना दी जाती है और खानों के अंदर आयरन रिच फूड की लिस्ट बना दी जाती है और कहा जाता है कि ये फुल फराहत लो, ये खाने खाओ। और माओ को भी जो है वो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का वो मीटिंग होती है 3 महीने में, अपनी माओ को भी वो साथ में ले आती है बच्चियां और उनको भी हिदायत दी जाती है। ये तरीके से इस प्रोग्राम को चलाता है और इसमें जो है वो बहुत खूबी से चलने के बाद में फिर 3 महीने के बाद में इसको शुरू कर देते हैं। यानी साल में ये प्रोग्राम 2 महीने चलता है और 2 बार चलता है, 3-3 महीने, और 2 बार जो है बच्चियों को अपने घर में खाना खाने के लिए और कौन कौन सी चीजें खाना उसके लिए किया जाता है। अब मैं धीरे से आपके
स्कूल की तरफ आ रहा हूँ, ये सारी चीजें स्कूल में होती है, हेल्थ सेक्टर में दी जाती है, वर्क प्लेसेस में होती है। और ये डिलीवरी चैनल जो है, जब आप एंटीनेटल केयर के लिए डॉक्टर के पास में जाती है, या 2 और 3 4 माएँ प्रेग्नेंट एक दूसरे की दोस्त होती है, वो एक दूसरे को ये सप्लाई करती है। तो पियर्स, टीचर्स, रेडियो अनाउंसमेंट, SMS एंड अदर, ये सारे मीडिया के जरिए औरतों को ये सारी चीजें सिखाई जाती है। बच्चियों को स्कूल में, हेल्थ सेक्टर में, वर्क प्लेसेस के अंदर में, और पीयर टू पीयर आउटस्ट्रेच, एक बच्ची सिंसियर है तो दूसरी बच्ची को ये सारी चीजें बताती है। ये स्कूल प्रोग्राम है, और ये बड़ी लड़कियों के लिए ये जो है इंटरमिटेंट सप्लीमेंट का प्रोग्राम है। इस तरीके से प्रोग्राम चलते हैं, और ये जो है ना आपको हेल्प करती है। कम्युनिटी के अंदर में भी जो है वेरियस टाइप्स की मीटिंग बुलाते हैं लोग। मीटिंग के अंदर छोटा मोटा नाश्ता पानी होता है, नाश्ते पानी के लालच से माएँ और लड़कियां वहां आ जाती है, और उनको ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है उनके फायदों के लिए, और उनको ये सिखाया जाता है। एक डोज तो अपने हाथ से ही वहाँ की औरतें जो है इन लड़कियों को, या तो एडोलेसेंट लड़कियों को दे देती है, और बाकी डोजेस घर में ले जाने के लिए देती है। इस तरीके से ये सारी चीजें होती है। अब मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत सारे सवालों का झुरमुट में मैं हूँ। हेल्थ सिस्टम के जरिए भी ये होता है, और इस हेल्थ सिस्टम के जरिए जब ये होता है तो ये बड़ा इफेक्टिवली होता है। पीयर टू पीयर आउटस्ट्रेच, जो बच्चियां एक दूसरे की दोस्त है, जिनका सहलापा है एक दूसरे से, तो वो एक सहेली जो उसमें इंटेलिजेंट होती है, जो होशियार होती है, वो दूसरे सहेलियों को ये सारी सारी चीजें बताती है, और इस तरीके से ये प्रोग्राम चलता है। तो इस तरीके से थैंक यू वेरी मच। मिसेस निगहत, जी थैंक यू अब सो आप मच जी डॉक्टर अपने इकबाल। सवालों जवाबों का। बिल्कुल बिल्कुल, सना है हमारे साथ, और थैंक यू सो मच डॉक्टर। मैं बल्कि काफी सारी चीजें जो मुझ में मतलब जो सिम्टम्स है वो भी मुझे नजर आए, तो वो तो खैर मैं आपसे आखिर में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगी। सना, कैन यू प्लीज टेक द क्वेश्चंस? Yeah, sure. Dr. Iqbal, have we got few questions here? यस, मैं एक जरा, एक करके वो लेती हूँ ताकि हाँ सबके लीजिए लीजिए। उसके जवाब मिल सके। पहला हेलो, क्वेश्चन अस्सलाम हमारे पास वालेकुम। था कि मैं जो है ना, जरा वेबिनार ले रहा हूँ मैं। एक वेबिनार खत्म करते से मैं कांटेक्ट करता हूँ। मैं डॉक्टर, कैन यू हियर? आई थिंक उनका स्टक हो गया है थोड़ा कनेक्शन। आई थिंक लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स टू फॉर हिम टू रीजॉइन। मीनवाइल अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में भेज सकते हैं, या ग्रुप में भी लिख सकते हैं। मैं एक सेकंड ग्रुप भी ऑन कर देती हूँ। मैं डॉक्टर इकबाल को कॉल करती हूँ। आई थिंक ही विल रीजॉइन हिमसेल्फ।
I think कि उनके connection में कुछ issue है, Sana. We have to wait a bit. I'm trying to call him. श्योर आप चेक कर लें मिसेस निगत, उसके बाद अगर कोई वो नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो वी कैन हैव द क्वेश्चंस एंड ही कैन आंसर इट लेटर इन द ग्रुप. हम अपना ग्रुप ओपन कर देते हैं इसमें, और बहुत से लो. अच्छा, डॉक्टर इकबाल की कॉल आ गई, एक सेकेंड. Dr. Gulnaz, thanks for joining us too. Good to see your name here. And we have a lot of doctors. Actually, there is some connection issues with the doctor's mobile, I think. Dr. Gulnaz, अगर आप कुछ जवाबात दे सकती हैं कुछ सवालों के? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल कहिए. जी डॉक्टर गुलनाज, आप मुझे एक मिनट दीजिए, मैं आपसे क्वेश्चंस में आपको शेयर करती हूँ. श्योर श्योर श्योर, कैरी ऑन. First question is like, what range of hemoglobin is considered very low and critical? Okay, we have international standards plus local standards, but overall in the world 7 grams of hemoglobin is considered as severe anemia, and anything less than that will be critical, like 5, 4, 3, 2, sometimes it will be incompatible with life. अगर मैं उर्दू में बात करूं तो चलेगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, तो पूरी दुनिया में 7 ग्राम्स का ना उसको सीवियर एनीमिया बोलते हैं. अक्सर औरतों के अंदर मिनिमम 12 ग्राम्स होना चाहिए हीमोग्लोबिन लेवल. हम लोग जब सीबीसी कराते हैं हीमोग्लोबिन का वैल्यू आता है 12 से 14, 14 से 16, लाइक मैक्सिमम रेंज इज 16 एंड मिनिमम इज 12. इन प्रेगनेंसी लिटिल इज कंसिडर लिटिल हायर. अगर नॉन प्रेग्नेंट है तो वी कैन कंसिडर लिटिल बिट बेटर, बट प्रेगनेंसी के अंदर वी कंसिडर वेरी सीवियर और सीरियसली लेते हैं, क्योंकि माँ की तरफ से ही बच्चे को जाता है ग्रोथ के लिए सब. सो ब्लड इज कंसिडर वेरी important factor in the growth and development of the baby fetus को. So critical value can be anything below 7. Okay, thank you, Dr. Gunal. There is one more question.
Can chemical iron causes oxidative stress in early pregnancy? It can cause. That's why we are try to avoid to give iron before the 12 weeks of pregnancy. Oxidative stress in the sense, what does they mean? What type of oxidative stress? I don't think I know. Maybe अगर आप जो question जिन्होंने किया है अगर आप सुन रहे हैं तो उसको मजीद elaborate कर दें because क्योंकि हम लोग ना यहाँ पे यही क्योंकि question है जब उनका. बेबी की जो ग्रोथ होती है फीटस की तो ऑर्गेनोजेनेसिस होता है. So that period is considered very critical. So we try to avoid any sort of extra chemicals in the body except अभी आजकल हम लोग ओमेगा 3 देने लगे हैं fish oil. Otherwise only folic acid is given. So we try to avoid iron up to 11 weeks. 9 to 11 is important. 9 to 11 weeks is very important. जिसके इस दौरान इस ड्यूरेशन में बेबी के ना ऑर्गन्स बनते हैं. तो कुछ भी केमिकल देने से हम लोग ना वी ट्राई टू अवॉइड इट. तो अनलेस पेशेंट हैज गॉट लाइक सीवियरली एनीमिक 2 grams 3 grams ऐसा है तो अलग बात है, व्हिच वी विल बी टैकलिंग विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन. अदरवाइज वी डोंट गिव ओरल आयरन. Okay. There is one more related to the kids. How to prevent low iron level in kids? How to prevent? It is mother's responsibility to give balanced diet. Right. Okay. So and do you iron recommend, rich- Dr. Gulnaz, that the like supplements should be given? मतलब बच्चों No, को मतलब जैसे अगर आप घर में हेल्दी फूड बना रहे हैं, होममेड बना रहे हैं, बैलेंस डाइट दे रहे हैं, तो केमिकल्स ऊपर का ओरल सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है. तो आयरन रिच फूड होते हैं जैसे कि पालक है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, अंडा है, दूध है, कैरेट्स, शलगम और अनार, फिश, हनी, डेट्स, liver. All these are very high, high in rich in iron content. तो अगर बच्चे का डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो माँ की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को अच्छे से ना पहले से ना खाने की आदत डाले. तो कभी बच्चों के लिए ना 2 खाने नहीं बनाना, या बच्चे का फूड है या हमारा फूड है, जो हम लोग खाते हैं उनको डालना है. तो बच्चे जब मांग करते हैं कि we want to eat only burgers, we cannot eat vegetables, आजकल के बच्चे नहीं खाते हैं. तो somehow we have to be the role models ourselves कि हम लोग को avoid करना चाहिए to have bad habits of eating and then try to have a family time. अगर बच्चे थोड़ा सा ना जिद करते हैं या कुछ करते हैं तो लाइक उनको कुछ इंसेंटिव्स दे के कि if you eat this we will give you that ऐसा दे के खिलाना पड़ता है जबरदस्ती. अगर in spite of that then the baby is showing hemoglobin low, anemia दिख रहा है, तो we have to investigate. Maybe उनको हुकवर्म इन्फेस्टेशन हुआ होगा, पेट में कीड़े होंगे, या अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होगा जिसको हम लोग बोलते हैं माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम. तो इन्वेस्टिगेट करके, अनीमिया में सिर्फ आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया नहीं होता, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अनीमिया. सिकल सेल अनीमिया है, ये है, वो है, हीमोग्लोबिनोपैथीज हो जाते हैं, थैलेसीमिया हो जाते हैं. तो वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट सॉर्ट ऑफ अनीमिया इज देयर, देन वी हैव टू ट्रीट अकॉर्डिंगली. Okay. And there's one more question. Is there like any damage to fetus due to mother's anemia? I think Yes. Dr. Iqbal has covered it. Yeah, there is definitely damage. अगर प्री प्रेगनेंसी से अनीमिक है तो लाइक वी हैव नॉट कम अक्रॉस के पर्टिकुलर सिंड्रोम होता है या पर्टिकुलर ऑर्गन में डेवलपमेंट डिले होता है, ऐसा कुछ नहीं है. कंजेनाइटल अनोमलीज, अलबत्ता बेबी का ओवरऑल जनरल ग्रोथ रिटार्डेशन होता है और which can lead to preterm. These are the 2 main worrying factors. जो पेट के अंदर बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है और प्रीटर्म डिलीवरीज होते हैं, उसकी वजह से subsequent factors will be very drastic and dangerous. That we have to avoid. And ऊपर से in some other form if you see, it can even lead to like for autism, ADHD हो सकता है, मेंटल एंड बिहेवियरल डेवलपमेंट्स में असर हो सकता है. अगर फोलिक एसिड नहीं लिया है, दिस कैन कॉज कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, पर्टिकुलरली जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बोलते हैं हम लोग. तो अगर फोलिक एसिड की कमी है तो उसकी वजह से कंजेनिटल अनीमिया हो सकता है, नॉट नेसेसरी बिकॉज ऑफ आयरन एज सच. तो वी हैव टू बी वेरी सीरियस प्रेग्नेंट वुमेन में, इसीलिए हम लोग सप्लीमेंट्स देते हैं टू अवॉइड दीज थिंग्स.
तो different level में like first trimester में, second trimester में, third trimester को consider करके we treat accordingly. जैसे डॉक्टर इकबाल ने कहा कि after 36 weeks we try to like you know, अभी तो वो बोले, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आपने खाया कुछ नहीं बना, अभी you have to do either iron therapy within the form of intravenous, or if it's less than 7 we give blood transfusion. क्योंकि subsequent again as he said like you know PPH जो postpartum hemorrhage होता है वो is one of the leading maternal mortality cause. So उससे औरतें बहुत मरते हैं, even in the best of the hands and best of the institution. Sometimes we cannot save a life. Right. So There is one prevention more is very always important. better than cure. हाँ No, sorry to cut you. आप अपनी बात पूरी कर लीजिए. जी नहीं, आप डॉक्टर गुलनाज साहब अपनी जो बात करी थी पूरी कर लीजिए पहले. हाँ, मैंने कहा कि we have to consider very seriously anemia in the last trimester, क्योंकि उसकी डिलीवरी के बाद जो इफेक्ट्स होते हैं, जैसे डॉक्टर इकबाल ने कहा कि हिस्टेक्टमी भी करते हैं, समटाइम्स इवन हिस्टेक्टमी कैन नॉट सेव अ वुमन्स लाइफ, उसमें भी मरते हैं लोग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कभी मिलता नहीं है, ब्लड नहीं मिलेगा तो we may lose a life, तो we have to take it quite seriously. थैंक यू डॉक्टर गुलनाज. एक थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एडोलेसेंट गर्ल्स के हिसाब से कि if the age girl age 10 having headaches and age 14 having hair fall, can low hemoglobin can be a cause? Also, if adolescent girl don't get period at same interval every month, it is delayed, can it be the cause of anemia? No, a girl not getting periods at the same interval may not directly lead to anemia, but frequent periods can cause anemia. अक्सर जैसे इमीडिएटली मेनारिकी के बाद जो पहला पीरियड्स होता है वहां से लेके 18 साल तक इरेटिक पीरियड्स होने के बहुत चांसेस होते हैं, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं. अगर पीरियड्स आर प्रोलॉन्ग, जैसे ब्लीडिंग 3 हफ्ते चल रही, 4 हफ्ते चल रही किसी किसी को, तो ये प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग कैन कॉज एनीमिया, और एनीमिया के वजह से अगेन periods will be irregular, so this will become vicious cycle. So we have to we have to break down that cycle. We should not let the girl bleed more than 7 days, or if it's frequent periods also we have to intervene. Okay, and like the hair fall or a headache could be the cause of low hemoglobin? Yes, can, because the hair fall has got multifactorial, one of them is anemia. Okay. Headache, a loss of concentration, children may not concentrate, they will be, you know, depression में भी चले जाते हैं, gloomy हो जाते हैं, पढ़ाई में they will not be doing fair. So we have to, when the child is quiet, not doing well in studies, not concentrating, then we have to think something is going wrong, so we have to investigate. And anemia is one of the commonest factor for that. Right. So the adolescents, boys also need iron. There is a question. It again depends on how his performance in school at home is. Like if he is become weaker in studies, or he is not playing well, he is sick, getting sick on and off, then investigate and treat. Anemia in girls, because they bleed, monthly bleed से थोड़ा सा common हो जाता है, but if you supplement them with good balanced diet, replenish किया तो like you know it doesn't become you know that bad, but if you just neglect, can turn into a chronic anemia. Okay, there is one more. Retardation is due to iron deficiency. Yes, can cause. What retardation? Growth retardation या mental retardation? I think आपने ADHD की बात की थी तो probably उनका mental उससे हो. Cerebral palsy जो बच्चे hypoplastic होके चलते नहीं है वो it is one of the factors. Anemia can lead to also, like it is not the factor, it is one of the factor for cerebral palsy children जो paralysis बच्चे पैदा होते हैं या अच्छे growth होती है, but like as I told, autistic child या ADHD child जो होते हैं. Right. Adolescents, girls से related उन्होंने question किया कि how to counter the headaches in young kids. Do we give them supplements? Headache again we have to see whether it is only related to anemia or some other cause, like whether she has eye vision problems है या something in the brain, like we should, एक छोटी बच्ची headache बोल रही है तो we should not neglect it. Okay. Doctor, so we have to. Dr. Iqbal Musani is back. Okay. So thank you, Dr. Gulnaz. You are more than welcome for rescuing us. Okay. Doctor,
मेरा जो क्वेश्चन था, आपने एक सिम्टम में लिखा था कि इनडाइजेशन और जैसे बेल्चिंग वगैरह भी इज अ सिम्टम ऑफ हीमोग्लोबिन। डॉक्टर इकबाल का फिर से हैंगअप हो गया। डॉक्टर गुलनाज, डू यू थिंक दैट इट्स अगेन अ सिम्टम ऑफ लो हीमोग्लोबिन? Actually, anemia can be present in many ways. Okay, like digestion का problem भी होता है because the whole system becomes weak. So it can be, but it is not the pathognomonic feature. Like, you know, तो ये हो रहा है, ऐसा नहीं. Then we have to again investigate, do the differential diagnosis. अगर कुछ दूसरे diagnosis में fit नहीं हो रहा था, hemoglobin एक CBC करने से पता चल जाता था, then we can relate this to it. No. अगर belching हो रही है, indigestion हो रहा है, hemoglobin normal है, then it is not related to anemia. Okay, then it may be some stomach problem. Yes. ओके डॉक्टर गुलास, एक और क्वेश्चन है. उन्होंने लिखा है कि मेरा HP लेवल 8 है. उन्हें कौन से टेस्ट करवाना चाहिए और किस डॉक्टर को दिखाना है, एज शी इज नॉट प्रेग्नेंट, और उनके पीरियड्स भी हैवी होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के साथ आते हैं, तो उन्हें अच्छा, किस जैसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाना है, क्योंकि अगर पीरियड्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्रॉनिक एनीमिया होता, तो इंटर्निस्ट के पास जा सकती थी. अगर पीरियड्स हैवी हो रहे हैं, क्लॉट्स आ रहे हैं, तो देन शी शुड प्रोसीड टू द गायनाकोलॉजिस्ट. ओके. और एक और सवाल ये है कि जो बच्चे हैं, जो लाइक फ्रॉम 10 अबव बच्चे हैं, वैसे वो एक्टिव हैं, सारा कुछ है, लेकिन क्या हमें उनका कुछ लैब वर्क करवाना चाहिए कि उन्हें किसी चीज की डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही है? क्योंकि एट टाइम्स बच्चा हेल्दी लगता है लेकिन कोई ना कोई डेफिशिएंसी चल रही होती है उसके अंदर. रूटीन चेकअप ऐसा कभी होता नहीं है, यू नो, ओनली ड्यूरिंग द स्कूल एडमिशन जनरल एग्जामिनेशंस होते हैं, तो दैट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू गेट अ चाइल्ड इन्वेस्टिगेटेड इवन इफ इट लुक्स हेल्दी. So any chance to have a general examination, you can do periodic checkup. ऐसा नहीं है कि every 6 months, every 2 years ऐसा करना है. Whenever there is an opportunity, जैसे हम लोग को पास, like, you know, they when they present with sneezing, cold, cough से होता है, तो we try to do CBC, पता चली जाता है. So small ailments में भी आजकल कराते हैं, तो doctors, some people will think, you know, हम लोग गए थे सर्दी के लिए, क्यों ब्लड का टेस्ट कराना है. तो एक CBC से ना we can come to know many things, कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन का कितना है, ये WBC इन्फेक्शन है या नहीं है. समटाइम्स इवन वी डिटेक्ट ब्लड कैंसर विद सम सिंपल CBC. सो एनी अपॉर्चुनिटी वी गेट, वी शुड नॉट लूज इट. ओके. एक है, उनकी रिक्वेस्ट है कि होल फूड आयरन पिल्स रिकमेंड कर दे. होल फूड आयरन, उसमें आयरन पिल्स कहाँ से आ जाएंगे होल फूड में? आई डोंट नो, ये उनका सवाल है कि होल फूड आयरन पिल्स ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं होती है. आई थिंक शी इज लुकिंग फॉर नॉन केमिकल बेस्ड समथिंग. या दैट्स व्हाट आई उनका सेड, मतलब ऑर्गेनिक समथिंग है. जैसे मैंने कहा है, अंडा इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, ऑल्दो सफेद लगता है. ऑल यू नो, रेड थिंग्स ओनली, लाइक रेड मीट है, it's a very good source of iron. Then green vegetables, all veggies, उसके अंदर carrot and this beetroot, and fruits के अंदर most important thing is pomegranate, rich iron content, and apple. If you have heard this moringa leaves, जो उर्दू में I don't know what they call it, moringa leaves आते हैं. Okay, drumstick की जो भाजी आती है, it is very good in nowadays, it's in boom. बहुत चलने लगा है. और पोल्ट्री के अंदर एग मिल्क आ गया, चीज वगैरह. और अगर मीट में जाते हैं तो फिश है, यू कैन ईट लिवर, उससे भी गुड हाई रिच सोर्स ऑफ आयरन है उसमें. ठीक है. एंड देन अगर वो लोग नॉन वेज नहीं लेना चाहते हैं तो दे कैन टेक आयरन में, इसमें डेट्स में, मुनक्का में और शहद में. ओके. Okay, thank you, Dr. Gulas. Thank you so much for answering all these questions. And आप सबका शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, और होपफुली आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर डॉक्टर गुलनाज और डॉक्टर इकबाल दोनों ने किया होगा. और आप हमारा ग्रुप का लिंक हमने फ्लायर्स पे भी, अपने मेन ग्रुप पे भी अपनी इंफॉर्मेशन का शेयर करेंगे इंशाल्लाह. डॉक्टर इकबाल की प्रेजेंटेशन भी वहाँ पे, और आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप उस पे रात तक हमें उस ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं. थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू गुलनाज.
and You're I more think than Dr. welcome. Iqbal I think नहीं join कर पाए दोबारा. So My pleasure. thank Maybe you. some technical problem must be there. Maybe. Yeah. So okay. So it's all from our side. निगत आप कुछ कहना चाहेंगी? I think it's all for today now. इंशाल्लाह फिर next session पे जरूर मुलाकात होगी और हमारे पास लाइनअप बहुत अच्छे सेशंस हैं तो इंशाल्लाह keep looking for our main group और आपको वहाँ डिटेल्स मिलती रहेंगी. Thank you everyone. Inshallah. Welcome. Okay.